Good morning, Good ma'am. morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Can you see the screen? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Today we are going to start environment of marketing, or we can say marketing environment. Okay. Can anybody tell me what do you mean by environment? Ma'am, external factors that affect the decisions of a company. Okay. External, internal. Environment can be internal also. Ecosystem of any business, which includes Wait a minute. the Certain factors with environmental factors which affect the working of business. And the all मैम एक्चुअली मैम इस डिफाइन के आगे मैम कुछ ऐसा भी हम लगा सकते हैं कि इकोसिस्टम ऑफ एनी बिजनेस okay. Ecosystem of a business. Anything else? They can be also said as a general force which affect our business. General forces that affect our business. Or Specific forces too. okay, anything else? हाँ जी, और बताओ. Ma'am, the factors can be of wide variety, micro or macro, at different levels. Okay. They can be the factors can either affect the company in a positive way or a negative way. They can be Either positive or negative, or micro or macro. और बताओ. मैम आपकी स्क्रीन विजिबल नहीं है वो Yes, ma'am. Screen is not visible. Okay. Visible? No, ma'am. Yes, ma'am. Now it's Yes, visible. ma'am. Yes, ma'am. Yes. Yes. Okay. Yes, ma'am. Yes. और बताओ. हाँ जी. Anyone else?
No, ma'am. Hmm? No, ma'am. Okay. So we will start with the discussion on the environment. Okay. Ritik ने बोला था that it is an ecosystem. It can be defined as an ecosystem of a business. Okay. तो सबसे पहले जो हम बात करते हैं वो हम बात करते हैं business as a system. ठीक है? आपको किसी सिस्टम का एग्जांपल पता है कि what we call as system? हाँ जी, as a system आपको कोई एग्जांपल पता है कि हम सिस्टम और किस किस चीज को बोलते हैं? Ma'am, interrelated things. Interrelated things, okay. Example? Ma'am, like the Apple ecosystem wherein Ma'am, like business is related with Okay, it. मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. Body. Our body is a system or not? Yes, ma'am. Okay, अब हमारी बॉडी की क्या-क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसकी वजह से उसको सिस्टम बोला जाता है? बताओ, हमारी बॉडी को सोच के देखो and then tell me that what all a system is. ma'am, the body is a system because of functioning of different parts together in coordination. Okay, different parts are working together. Okay. Ma'am, no part of the body can work exclusively. Right, because they are interdependent on each other, right? Or They have their own importance because any other organ cannot do the work of any yes, everybody, like a liver cannot do the work of heart. yeah, and right. lungs. So Every part has different working, right? Ma'am, functions of one organ or one part affects the other organ or other systems of the body. Right, right. Or okay, let me list down all the characteristics of a system. Okay, I'm thinking about body as a system and now I'm listing down its characteristics. First, body consists of various subsystems. Do you agree? हम बोलते हैं Yes, ma'am. respiration system, immune system, right? So it is one system which has various subsystems, right? Now, all these subsystems have their own working. They are system in themselves क्योंकि उनकी खुद की working भी है. Like respiration system is working and then immune system has altogether different working. So they have their own set of components and they are working in their own processes. Okay, but all these subsystems are dependent on each other. Dependent है ना? हमें हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पे हमारी हेल्थ डिपेंड करती है, हमारे इम्यून सिस्टम पे भी हमारी हेल्थ डिपेंड करती है. अगर हमें स्ट्रेस है तो दैट कम्स ऑन आवर बॉडी एज वेल.
So all of these systems are dependent on each other. We can say that they are interrelated. Their functioning is interrelated and interdependent on each other. Now, अब ये सारे all these systems are working for a common goal, that is survival as well as Profit. growth. बॉडी की बात करते Yes. बॉडी को भी तो सर्वाइव करने के लिए ग्रोथ करने के लिए इसके सारे ऑर्गन्स को काम करना जरूरी है, इसके सारे सिस्टम्स को काम करना जरूरी है. अगर एक भी सिस्टम अच्छे से काम नहीं कर रहा होता तो ग्रोथ और सर्वाइवल दोनों ही इंसान का क्या हो जाता है, इट्स डिफिकल्ट, राइट. देन ऑल दीज हमारी बॉडी में सिस्टम्स हैव टू पार्ट्स टू देम. ठीक है, कौन से? एक हमारे इंटरनल पार्ट है एंड दूसरा हमारा क्या है, एक्सटर्नल, विच कैन बी सीन आउटसाइड. हमारा फिजिकल मेकअप, माय बॉडी, हमारी सेंसेस, दे कैन बी looked upon, but what is in our heart, what is in our stomach, that cannot be known. So there are two faces of our body, internal and external, right? Then next, the system, हमारा जो बॉडी सिस्टम है वो क्या है, for this system is a part of bigger system. ठीक है, जो हमारे इकोसिस्टम कह सकते हैं हम, एनवायरनमेंट कह सकते हैं, राइट. ये सब हमारे क्या है, हम हमारी जो बॉडी है दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अ सिस्टम विच इज इकोसिस्टम और एनवायरनमेंट, जहाँ पे हम दूसरे लोगों के साथ को एग्जिस्ट कर रहे हैं, दैट इज एनिमल्स एंड प्लांट्स. ओके, नाउ डू वी गेट अफेक्टेड बाय द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट? Yes, ma'am. Okay, so yes, this system of body can affect and can get affected by external environment. हमें जुकाम, वायरस, ये सब अटैक कर सकते हैं because we are open to external environment, right? Okay, so this system can affect and can get affected by external environment. And lastly, there can be threats, but हम उसको कैसे अगर external environment हमें negatively affect करता है हमारी body को, तो हम उसको कैसे fight कर सकते हैं? Through internal strength. अगर कोरोना वायरस है तो मैं उसको कैसे fight कर सकती हूँ? Through my immunity, through my internal strength, through my control, through my sanitization, through my hygiene, everything that I can fight with the help of my internal strength. All these points are clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now, can you, from this analysis, from these 9 points, can you tell me the characteristics of a business? Business is uncertain. अरे Dynamic. 2 points को reference में रख के you need to tell me the characteristics of a business as a system. Ma'am, a business also has various sub departments like sales, marketing, which make up the whole management of the. Right? So effect. पहले point से हम ये assess कर सकते हैं that business also consists of, business is a system, and as a system it also consists of various subsystems, various departments, various branches which are working together. Okay, next point. मैम जितने भी फंक्शन होती है ये डिपार्टमेंट होती है उसकी अलग अलग फंक्शन होती है. Yes, they have their own working, they have their own set of processes. They can have their own different product altogether, or they can have different function altogether. So they have their own set of working. But Next. dependent on each other. They are interrelated and interdependent on each other. अगर production department में कोई fault आएगा तो it will automatically get reflected in the sales department as well, right?
So all their working is interdependent on each other. Next, Their Ma'am, goal they is have common goal. they have common goal, which is they may have their own goals, departmental goals. Profit but maximization. one goal, common goal, efficiency, effectiveness, survival, and growth of the business. Right? Next. हाँ जी, आगे बताओ. all departments have two parts, internal and external. Not all department, overall organization has two parts, internal and external. There are certain things which are internal to it. इसकी philosophy क्या है, इसका structure क्या है, इसकी ideologies क्या है, इसके employees कौन है, they are internal. And then there is external part of the organization where it deals with market, where it deals with competitors, suppliers, which are external to the organization. जैसे हम डायनामिक भी बोल सकते हैं, डायनामिक इन नेचर. Sorry? हम डायनामिक इन नेचर. हाँ, डायनामिक इन नेचर भी बोल सकते हैं. राइट, ओके, गुड. Okay, next point. The system is a part of the bigger system. The system is a part of the bigger system. Business is also a part of the bigger system. And Which bigger system like company like Samsung, Apple are part of bigger industry, mobile industry, which in fact are part of a bigger industries. No, not by bigger industry. We don't mean that. क्या छोटी सी shop part नहीं है system का? They are Yes, also a ma'am. part of the No, system. ma'am, like every element of that, like the big companies, the small retail shops are the part of the bigger industry. Right. They are part of industry, and industry are part of The economy. nation, economy, and economy is a part of The world welfare. world economy. Right. So we all are layered up. Right. So a business is a part of industry, industry is a part of a nation, nation is a part of global world, because we are in a globalized world. So there are so many factors in the internal, external, in the environment which are affecting the business. Right. Ma'am, can you So call we it pervasive? Ma'am, it is pervasive also. no pervasive, nahi pervasive, no, not pervasive. Or now organization 8 point को refer करो. Organization can affect and can get affected by the external environment, right? It can contribute also in the And- form of GDP, in the form of nice investments, but it can also get affected by the external environment, right? So political, legal, economic, जो भी हमारा situation चल रहा है उससे हमारा business क्या होता है, affect होता है, right? Or Ma'am, the internal strengths of a company. एग्जैक्टली देखो, ये सारे फैक्टर्स जो हैं एनवायरमेंट के फैक्टर्स, वो सभी बिजनेस को अफेक्ट करते हैं. बट कौन सा बिजनेस, कुछ बिजनेस फेल हो जाते हैं, कुछ बिजनेस सक्सेसफुल होते हैं, ऐसा क्यों? Ma'am, because of their strengths and weaknesses that they cope upon. अब मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, लेकिन आप में से कुछ बच्चे बहुत अच्छा करेंगे, कुछ बच्चे नहीं करेंगे. इट इज बिकॉज ऑफ देयर ओन IQ लेवल, ओन strength, that they are able to process the teaching. Similarly, a business may fail if it does not have internal strength to fight with, right? And then yes, dynamic in nature businesses, हमारी body को भी adapt करना पड़ता है. जब winters आती हैं तो we gain an extra layer of body ताकि हमारी body warm रहे. And when there are summers, we shed weight so that हमारी body cool रहे. So we need to adapt. So business have to be adaptive as well, because the environment is dynamic in nature. Right? Yes, ma'am. Anything else? Yes. Okay. So now as a system, we can say that business has an environment, और हमें वो environment हर एक function के लिए study करना जरूरी है. मार्केटिंग एनवायरनमेंट, मैंने आपको पहले ही बताया कि मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में मार्केट एनालिसिस बहुत जरूरी है. ओके, दैट इज मार्केट एनालिसिस बिफोर लॉन्चिंग एनी प्रोडक्ट.
you need to analyze the market. अगर आप market को analyze करने में fail हो जाते हो, in that case there is a possibility of failure of your product, right? So market analysis के लिए market research and there is a need to market environment. तो environment भी दो तरीके का होता है. It can be referred to as external and internal, or it can be referred to as micro and macro, right? Ecosystem of business हमने discuss कर लिया ऊपर. That as a system, business की क्या characteristics है. External and internal factors which affect the working of the business. Can anybody tell me what all internal factors are there that affect the working of the business? Internal factors like company policy, the policies of a company. Yes. Policies. Next. Policies like Machinery. Quality of employees. Then Quality of employees. Money. Price of their Behavior, product. behavior of employees and Behavior behavior and working style of employees. Ma'am, behavior of and employees. working style of employees. वो men में ही आ गया ना. Okay. Ma'am, minutes. I mean Minutes? time. हाँ. Ma'am, time which is utilized in the production. Minutes. Okay, technology बोल सकती हूँ मैं. ma'am, the organizational structure of a company. Yes, structure. और Materials. material. Okay, resources. Next. Brand name. Goodwill. Right? Yes, ma'am. और आइडियोलॉजी, एक ऑर्गेनाइजेशन की सोच क्या है, उसका मिशन क्या है, विजन क्या है. मतलब मान लो मेरे को एक ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन बनना है, तो मेरी आइडियोलॉजी भी तो यूनिक है ना. Yes, ma'am. That is an internal factor. Right? Okay. So now comes the external factor. कौन से होते हैं external factors? Various factors like political. हाँ? Political. और political. Cultural. Next. Cultural. Legal. Social. 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 Technological. Okay. Demographical. The potential of the organization to stand up to customer potential. Economic factors. Customer satisfaction. Economic. Next, supplier. Competitor. Competitors हो गया. Next. Demography हो गया. हो गया. हो गया. Market intermediaries. Intermediaries. Next. Inflation. Ma'am, demand. Economic में आ गया. Demand. Social culture environment. Social culture environment. हो गया. स्क्रीन दिख रही है ना आप लोगों को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. और Ma'am, price level. इकोनॉमिक में आता है. Ma'am, Natural resources, or we can say eco. Okay, natural resources and environment. देख सकते हैं. मैम रिसोर्सेज तो मटेरियल में नहीं आ जाएगा.
नहीं, नेचुरल रिसोर्सेज, मटेरियल तो ऊपर आपका अंदर जो आपको प्रोडक्शन के लिए चाहिए वो है ना, ये तो नेचुरल रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं। ओके मैम। आप आपके एयर, वाटर, वो उन फैक्टर्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, और इंटरनेशनलाइजेशन भी बोल सकते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे कौन कौन से फैक्टर्स हैं वो सारे भी इसके अंदर आते हैं। ओके, तो इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स में क्या डिफरेंस है? Ma'am, internal are created by a company's internal matters which can be under its control, but external factors are not in its control. Yes, तो internal factors, these are the factors which are within the control of the organization, right? Now, these are the factors which are beyond the control of an organization. और बताओ? Ma'am, internal factors can be changed. Internal factors, वही तो वो कंट्रोल में ही तो आ गया ना। हाँ जी, now they are unique to individual organization. Yes. जबकि वो क्या है? Or we can say bracket में specific, Ma'am, but external right? factors can also be specific. They are broad. They are not specific to a particular No, ma'am, like organization. the Maggie ban was an external factor, but particularly it was an specific for Maggie. But अगर आप एक ब्रांड नेम की बात करोगे ना, indirectly तो वो ब्रांड नेम में ही आ जाएगा ना। Ma'am, but it's not in the like if we go internal factors, to my understanding, are कस्टमर those. बिलोंग करते हैं मैगी को। Yes, ma'am. कस्टमर तो कस्टमर है ना, कस्टमर बिलोंग तो नहीं करते ना मैगी को। No. तो फिर कैसे ब्रांड नेम है वो तो, जो आप इनडायरेक्टली कस्टमर के ऊपर बता सकते हो। Okay. They are not specific to Maggie. Maggie cannot buy its customers, right? But वो तो उसका ब्रांड नेम है, which is again an internal factor. वो उसकी गुडविल है जो उस सेट ऑफ कस्टमर्स को कैप्चर। मार्केट शेयर हम बोलते हैं 60% मार्केट शेयर इसका है, No, बट no, ma'am. कौन My सी question is कि जैसे मैगी का बिजनेस बंद हुआ, हम्म it was an external factor specifically to Maggie. स्पेसिफिकली कैसे? लीगल लॉ तो सबके लिए सेम रहेगा ना, लॉ मैगी के लिए स्पेसिफिकली नहीं बनाया गया, उस लॉ ने मैगी को इफेक्ट किया, Okay, 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 okay. बट मैगी के हिसाब से लॉ नहीं बना वो। Yes, तो yes. वो ब्रॉड फैक्टर्स है जो सबको इक्वली ट्रीट करेंगे, चाहे वो मैगी होती चाहे वो कोई और होता, वो इक्वली ट्रीट करेंगे लॉ के आईज में। दिस इज व्हाट वी मीन बाय फैक्टर्स अफेक्टिंग। Okay, अब ma'am. मान लो एक पॉलिटिकल टर्मोइल आया है, जैसे डीमोनेटाइजेशन आया है, तो डीमोनेटाइजेशन अब आप एग्जांपल जनरल लो है कि वो उसने तो जनरल पेटीएम है. को सबसे ज्यादा फायदा दिया, बट बहुत सारे बिजनेस हैं जिसको उसने नुकसान भी दिया है ना। Yes, बट ma'am. पॉलिटिकल तो पॉलिटिकल ही रहा ना, उसने तो एक पॉलिसी लाया ना। Yes, अब yes. वो को कैसे इफेक्ट करती है, Short-term inflation. that is based on their internal functioning. मेरी Okay. इंटरनल फंक्शनिंग के ऊपर था कि पेटीएम पहले से ही था, डीमोनेटाइजेशन के टाइम पे थोड़ी आया है वो। अब मेरी इंटरनल स्ट्रेंथ थी उस टाइम पे, अगर मैं मान लो मैं पेटीएम चला रही हूँ या जो भी है, तो माय ऑर्गेनाइजेशनल आइडिया वाज सो यूनिक दैट इट fitted the situation at that point of time, और इसीलिए I tend to gain, Okay. right? Yes, So ma'am. that is again specific to me. Oh. But these are the factors which affect everyone equally.
कोई डिफरेंशिएट नहीं करता है, बट येस हाउ दे विल बी इफेक्टेड दैट डिपेंड्स अपॉन देयर ओन यूनिक नेचर, राइट? तो सिमिलरली मैं ये भी कह सकती हूँ दैट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट प्रेजेंट्स lot of opportunities and threats to an organization, right? जबकि internal environment is about your strengths and weakness. Weaknesses तो internal होती है ना, Yes, strength ma'am. भी internal होती है, weakness body में weakness feel हो रही है, so that is internal and specific to you. Strengths, आपकी body की क्या strength है? Some people are very flexible, some people are very tough build up, they have natural strength and weaknesses, right? But external factors क्या करता है? Opportunity भी देता है as well as threats भी देता है. It can pose you various challenges also, and it can give you various opportunities also. Is that clear? Yes, किसी को कोई doubt है? No, ma'am. Okay. So अब एक चीज है that external environment can further be divided. किसमें? Micro and macro. Macro. Okay. पॉजिटिव और नेगेटिव तो हो गया कि थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज होती हैं, तो इट कैन बी पॉजिटिव और इट कैन बी नेगेटिव. इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेंथ व्हिच इज पॉजिटिव और इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ वीकनेसेस व्हिच इज नेगेटिव. ओके, so external environment can further be divided into micro and macro factors. Micro factors वो होते हैं जो immediately आपको इफेक्ट करते हैं, immediate मतलब आपके क्लोज होते हैं, और macro factors वो होते हैं जो जनरल होते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैकडोनल्ड्स है, मैकडोनल्ड्स का कंपटीशन कौन है? बर्गर की. बर्गर किंग, KFC वगैरह वगैरह. अच्छा, बर्गर किंग उसका कॉम्पिटिटर है या KFC, ये बताओ. Burger King. बर्गर. बर्गर किंग. नहीं, KFC मतलब मैं दोनों. दोनों है कॉम्पिटिटर. तो फिर ये क्यों कह रहे हैं कि बर्गर किंग ज्यादा है और KFC कम? Burger King serves the same variety of food. प्रोडक्ट लाइन सेम है. एक्चुअली बर्गर किंग और मैकडी की जो प्रोडक्ट लाइन है वो एकदम सेम है, और ऑन कंपैरिजन टू KFC की जो प्रोडक्ट लाइन है वो ज्यादातर फोकस करती है नॉन वेज प्रोडक्ट्स पे, लाइक चिकन एंड एक्सेट्रा. KFC कॉम्पिटिटर थोड़ी हुआ फिर मैकडोनल्ड्स का. It is a मैम वो competitor, but कॉम्पिटिटर इसलिए भी तो हुआ कि वो उनकी प्रोडक्ट लाइन में भी इंटरफेयर yes, करता है. ma'am, इनकी it प्रोडक्ट is लाइन it is a competitor. वाली The product main line भी competitor of एक McDonald's. स्पेसिफिक प्रोडक्ट पे के लिए तो वो मतलब ज्यादा कंपटीशन देता है बर्गर किंग उसको, मैकडोनल्ड्स को. और मैम सबवे. सबवे. अच्छा, तो मतलब देखो इमीडिएट कॉम्पिटिटर कौन हुआ? अगर मैं इसको ऐसे बोलूं, Immediate competitor is Burger King, but at large, बट बाकी जितने भी हैं, चाहे वो पिज्जा हो गया, चाहे वो सबवे हो गया, चाहे वो रेस्टोरेंट्स हो गए, चाहे वो कुछ भी हो गए, वो सारे मैकडोनल्ड्स के कंपेटिटर्स हैं. बट मैकडोनल्ड्स सबसे पहले किसको डिफीट करना चाहेगा? Burger King. बर्गर. यही डिफरेंस होता है बिजनेस के इमीडिएट एनवायरनमेंट में, क्योंकि बिजनेस की जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उसकी बड़ी सारी लेयरिंग है. तो हमारा सबसे पहला एक बिजनेस जो है वो पार्ट है किसका? इंडस्ट्री का. आप लोगों ने बताया था, तो जितने भी इंडस्ट्री के फैक्टर्स हैं वो एक्सटर्नल फैक्टर्स में आते हैं. इंडस्ट्री के कौन कौन से? कंपटीशन हो गया, सप्लायर हो गए, कस्टमर हो गया, रॉ मटेरियल हो गए जो बाहर से आ रहे हैं. तो दैट इज स्पेसिफिक टू अ पर्टिकुलर इंडस्ट्री. नेक्स्ट लेयर आती है जहां पे नेशनल और इंटरनेशनल फैक्टर्स आते हैं, जिनको हम मैक्रो फैक्टर्स बोलते हैं, विच आर पॉलिटिकल,
legal, international foreign exchange fluctuations, economic, and all of that. So external environment of a business is divided into two parts: micro, which is immediate environment of a business, and macro, which is the second layer of external environment to the business. Is that clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So आज हम इतना ही पढ़ेंगे. I hope that every environment of a business is clear to you. We will learn in Monday's class ना. आगे पढ़ेंगे हम कि कैसे कैसे components ये business को affect करते हैं. Okay? Okay. Yes. Okay, ma'am. Ma'am, can you please share the notes after 7 P's of services in the group? Okay. Okay. After I'll share. placements. मैं ये पूरा डॉक्यूमेंट भेज देती हूँ अब तक जितना भी हुआ. ठीक है? Okay, thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Okay. Shall we leave? Yeah.